11 people, including 2 children, killed in a gas leak in a Ludhiana factory. The leak reportedly came from the milk plant's cooling system. Prime Minister Modi leads the BJP's charge in poll-bound Karnataka. Priyanka Gandhi targets Prime Minister Modi and the BJP over corruption. Prime Minister Modi's Man Ki Baat hits a century, goes global, gets aired live in London, New Jersey. The wrestling body chief makes a big claim. Brij Bhushan alleges that the Congress's Dipinder Hooda is behind the wrestlers' protest. The wrestlers dismiss the political angle to the protest. At least 11 people have been killed after a gas leak in Punjab's Ludhiana. The leak happened at a factory that produces dairy products near the Sherpur Chowk in Ludhiana. The gas leak was first noticed around 7:15 a.m. on Sunday morning. The entire area was cordoned off and teams of the National Disaster Response Force or NDRF from Bhatinda were dispatched for rescue operations. According to initial reports from local media, this factory, the Goel milk plant, a factory that produces dairy products, experienced a gas leak from the cooling system. Nearby residents then were found fainting in their homes, and it is still considered unsafe for anyone to enter the area. अभी तक जो 11 लोग हैं उनकी डेथ हुई है जी गैस लीक से, और 4 जो लोग हैं वो अस्पताल में दाखिल हैं, जिनको मैं देखने आया हूं, और उनके परिवारों से मिलके मुख्यमंत्री की तरफ से उनकी संवेदना प्रकट करने और उनके लिए जो भी एक्सग्रेशिया जो उनको मदद चाहिए वो मदद करने के लिए मैं जहां पहुंचा हूं। सवेरे पहला जिहड़ा असीं दस्सिया कि इट लुक लाइक कि कोई कैमिकल कंटैमीनेशन हुई सी, जिस करके 11 लोगों की डेथ हो गई ते 4-5 बंदे जिहड़े सीगे वर अंडर ऑब्जर्वेशन ते उन्हां नूं ट्रीट कीता जा रहा सीगा। And Prime Minister Modi took a dig at the infighting in the Congress today. That's on Sunday during the election campaign in Karnataka, where the party is the main opposition. At a poll rally in Karnataka's Belur, the Prime Minister also targeted H.D. Kumaraswamy's Janata Dal Secular, which is another prominent player in the state. The Congress and the JDS, he says, are both symbols of instability. Wherever there are Congress governments in the country, their signature is infighting between the leaders, the Prime Minister said. The BJP has been focusing exclusively on Karnataka, the only state where it holds power in the south, hoping to gain a consecutive term in power. And a number of union ministers and the party top leaders have been campaigning in the state. The Prime Minister held 2 back-to-back road shows yesterday and today, 2 road shows within 24 hours. And he's also scheduled to address a string of rallies in the state ahead of the May 10th elections. The BJP is pulling out the big guns as Chief Minister Bomai's government has been riddled with allegations of corruption and bribery. Last year, the Congress even launched a mock campaign, a PayCM campaign, to highlight allegations that the state's ruling BJP was extracting 40% commission from builders, contractors and others. Today, on Sunday, the Prime Minister trained his guns in the Congress on the issue of corruption, and its party president Mallikarjuna Kharge's snake barb at him. The Congress's Priyanka Gandhi Vadra hit right back. अभी इस चुनाव में भी कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं, और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना।
वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। अब कर्नाटका का चुनाव में इनका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चुनाव में कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा सांप है, सांप। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। देखिए इस चुनाव में मुद्दे क्या हैं, उससे ध्यान मत भटकाइए। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ है, लूटा गया है जनता को, यही मुद्दे हैं। अगर मोदी जी या बीजेपी के जो नेता हैं जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं, उसको भटकाना चाहते हैं, तो वो करें, हम नहीं करेंगे। हमारे लिए मुद्दे क्लियर हैं। ये चुनाव जनता के लिए है। जनता चुनती है कि उसकी सरकार कौन सी आएगी, कैसी आएगी, और जनता जानती है कि उसके साथ धोखा हुआ है, लूट हुई है और बदलाव चाहती है। And as Karnataka undergoes a high voltage campaign as part of our extensive coverage of the upcoming elections, we've been taking a look at various constituencies in the state. And tonight, let's take a look at one of the constituencies through which the Prime Minister's roadshow traversed and why it was picked, the Yashwantpur constituency. It's a prestige battle for Yashwantpur in northwest Bengaluru, the bastion of the Vokaligas. Prime Minister Narendra Modi led the BJP charge with a mega show of strength, his first roadshow in the state after tickets were announced. 3-kilometer roadshow has propped up BJP candidate ST Somashekar. It's the second largest constituency in Karnataka with 5.6 lakh voters. And voters want their next leader to focus on traffic decongestion and ensure a robust transport system. We would expect our next MLA to make Balwant as a signal-free zone. Second thing, we want Tumkur Road to be pedestrian-friendly road so that people can access metro easily and thereby not putting load on traffic. And the third thing we want is elderly are not able to cross the road right now, so we want subway to be done in major places. We are looking for good underpass on the Tumkur Road, maybe at a major junctions where elderly people can easily cross the roads, which is very, very inconvenient right now. So we want our next leader to focus on that first. While civic issues have dominated citizen debates, the politics boils down to caste. Vokaligas have about 1.5 lakh votes in Yashwantpur, resulting in the Battle of Gowdas. In fact, each of the three parties, the BJP, Congress and the JDS, have fielded a Gowda from the seat. Despite anti-incumbency, the BJP has fielded three-time MLA ST Somashekar, who engineered defections and ensured the fall of the JDS-Congress government back in 2019. Your opposite candidate, for example, JDS, they're using the emotion card that he has unsuccessfully contested against you. But do you think, this time again you still have a chance, once again in BJP ticket? ಯಾರಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಇದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಮನೆಗೆ ತರಕಾರಿ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪತಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಕಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಲಂಸಮ್ಮಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪತಿ ಇದೆ ವಿನಾ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಂದಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅನುಕಂಪನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಿಂಪತಿನೂ ಇಲ್ಲ. The JDS has once again backed Javarai Gowda, who unsuccessfully contested against ST Somashekar in 2013 and 2018 elections. Sources in the party claim voter sentiment favors Javarai. ST ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ there is a sympathy because ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 5 years, ನಿಮಗೆ ಆ ಸಿಂಪತಿ ವೋಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಸೇಸ್. ಈಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅವರು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ? ನಾವು BJP ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, 40% ಕಮಿಷನ್ನು, ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಭ್ರಷ್ಟಾಡಳಿತ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಮಾರನವರ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು 2 ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಅವನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಶಾಸಕರು ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ. 3 ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ದೀನಿ, ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು, 1 ಬಾರಿ ಜವರಾಯಗೌಡರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The Congress, meanwhile, has fielded a new face, Balraj Gowda. Yeshwantpur constituency, a battle of prestige for political bigwigs in the state of Karnataka. While the BJP is leaving no stone unturned to ensure victory, the JDS hopes to ride the anti-incumbency wave. In Bengaluru, with Babu Shrija for NDTV. And Prime Minister Modi's monthly radio program Man Ki Baat completed its 100th episode on Sunday, and the 100th Man Ki Baat episode was aired at the United Nations headquarters in New York. The program features guests who had appeared in the early episodes of the talk, with the Prime Minister interacting with them about the progress they have made since then. PM Modi's flagship radio show, his direct communication with the citizens of India, reached a landmark on Sunday. 100th episode without a break. The program that airs on the last Sunday of every month has been running non-stop since October 2014. And the government and the BJP ensured that the milestone is celebrated in a grander manner. On its 100th episode, Man Ki Baat went global, being broadcast at the UN headquarters. Events were also organized by the Indian missions in several countries, including the US and UK, that saw enthusiastic community participation. Back home, live events were organized at about 4 lakh locations by the BJP, with top leaders such as JP Nadda, Amit Shah, Rajnath Singh, and other union ministers attending them. Ahead of the 10-episode milestone, the government also released a sneak peek into the making of the popular radio show. Ahead of the 100th episode, an IIM survey has found that nearly 96% of the population is aware of Prime Minister Modi's monthly radio program Man Ki Baat. The program has reached 100 crore people who are aware and have listened to the program at least once, a government statement said, quoting the report. The report states that there are 23 crore regular listeners of the program, and it has cited powerful and decisive leadership and emotional connection with the audience as reasons for its popularity.
In his citizen outreach program, Prime Minister has raised a number of social issues from girl child to environment to climate to local business and people's efforts. He has also interacted with a number of individuals lauding their efforts on the program. जो जनता के लिए जो वक्त निकाल रहे हैं, उनको वो वक्त दे रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ अमेजिंग। और ऐसे ऐसे लोगों को वो रीच कर रहे हैं जहां छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गाँव में इतने सारे लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिनका लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को वो लोगों के सामने ला रहे हैं, उनकी जो हीरोइज्म है वो लोगों तक ला रहे हैं और नॉट ओनली हमारे देश में लेकिन इवन ग्लोबली उनकी पहचान बन रही है, विच इज़ अमेजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन का इससे बेटर कोई फॉर्मेट हो नहीं सकता। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं लोगों के साथ कनेक्शन कम हो जाता है और इतना अच्छा लगा सुन के दैट मोदी जी को लोगों के साथ कनेक्टेड रहना था। आई थिंक दैट्स द साइन ऑफ अ ग्रेट लीडर। And I think that truly shows the connect that the Honorable Prime Minister of India has with people not just in India, but indeed the diaspora across the world as well. मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। आप कल्पना करिए, ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV। देशवासी। And the now disbanded Wrestling Federation of India's chief, the BJP MP Balwant Singh, on Sunday made a tall claim, throwing some light or clarifying a little bit his cryptic accusations that he's been repeating that there's only one family and one akhada, which he claims is out to malign his image by, quote, fake complaints of him sexually harassing women wrestlers. He went on to say that 90% of athletes and their guardians trust the Wrestling Federation, and adding that the women who have complained against him are all from one family in the same akhada, and that the Congress leader Dipinder Singh Hooda is the patron of this akhada. He said all this in an interview to the news agency ANI. Now, the Delhi police, remember, filed 2 FIRs, 2 cases against Balwant Singh just only after the Supreme Court had to step in and ordered them to do so. All of this amid protests at Delhi's Jantar Mantar, protests by wrestlers that include some of the biggest names from the world of wrestling, wrestlers who brought India fame and glory, Olympic champions Bajrang Punia, Sakshi Malik, Vinesh Phogat. One of these FIRs is over a complaint of sexual harassment by a minor. It has been filed under the Stringent Protection of Children from Sexual Offences or POCSO Act, which gives no scope for bail. The wrestlers on protest have dismissed these charges. They've dismissed any political angle to their protest. सर वही तो ना, ये बोल रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, हमें तो यही नहीं पता राजनीति में कितने सांसद हैं, कितने विधायक हैं, हमें तो यही नॉलेज नहीं है कितने क्या है। तो राजनीति तो हमें पता ही नहीं है क्या है। हम तो दिल से बोलते हैं और दिल की बात दिल तक जारी है, इसीलिए सब लोग यहाँ बैठे हैं। हमारी लड़ाई इलेक्शन के लिए नहीं है। यहाँ पे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पे आए उनसे सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप सभी मीडिया वालों से भी, उसके इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, उनको देखकर आप अपनी लड़कियों को गेम में भेज सकते हैं ऐसे? देखिए, हरियाणा के 90% खिलाड़ी और गार्जियन भारतीय कुश्ती संघ के ऊपर भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं। ये एक चंद परिवार है, जैसे एक चंद परिवार है, और जितनी लड़कियां निकल करके आई हैं आरोप लगाने वाली, वो एक ही अखाड़े की हैं, एक ही अखाड़े की हैं। और कल बजरंग पूनिया ने सवाल किया था कि हमको कैसे पता चला कि वो एक ही अखाड़े के हैं, क्योंकि हमको नहीं, सारी दुनिया को पता है। महादेव रेसलिंग एकेडमी की ही सारी लड़कियां हैं, और जिस एकेडमी के कर्ता धर्ता संरक्षक दाता सब कुछ जो है दीपेंद्र हुड्डा हैं।